we have to discuss now types of function, children. Okay, so some definitions are given here which you need to understand. Fifth definition here is saying a function mapped from a set x to y. Remember last year we've studied relations and functions. So this is what the first one is. Its domain, this is its codomain. So a function mapped from x to y is defined to be 1 1. 1 1 is called as injective. That's the word given to it. If the image of distinct elements of x under f, this mapping bolo function, are distinct, means that for every x1 x2 belonging to x, we will have x1 f of x1 equal to f of x2. That implies x1 is equal to x2, means whenever the image will be equal, that is only possible if the entry in the domain pre-image is also the same. That is called 1 1 mapping. Okay, otherwise it is called a many one. Remember we had studied last year that one many is not a function. Function की definition क्या थी? Function was a relation where the pre-image is not to be repeated, where the pre-image is not repeated. So अगर हम बोलें कि आपका one many function है, ऐसे one to many mapping जा रही है, one is associated with many, then that is not a function at all. Okay, so we can have function as many one, means we can have many entries giving as many pre-images giving as same image. That is many one. And if every pre-image has some image, every pre-image has a different image, then that is called your 1 1 mapping. That is what they are telling you. That's the definition, and this is the technique we will use in solving the questions as well. Okay, next definition is that if a function from x to y is there, and then that is called to be an onto function. Being onto nature is called surjective is the word. Okay, if each element of y is the image of some element of x under this map f. That is, for every y belonging to y, there exists an element x belonging to x, such that y will be f of x, or f of x is equal to y. Okay, so in simple language, what we can understand this is that every image should necessarily have a pre-image, irrespective of कि वो repeat हो रहा नहीं repeat हो रहा जो भी, means we should not have extra entries in codomain, or in other words I can say range is equal to codomain. We had three definitions last year: domain, codomain and range. Collection of images is called range. So when range is exactly equal to the codomain, means codomain में कोई भी entry बचती नहीं है, हर उसकी entry की image वो mapping हो गई होती है, then that is called as surjective or onto function. Okay, you'll understand that better. Yes, these images will help you understand that much better. Okay, so here it is. These are different types of mapping they've shown you. So here what is happening is, ये हमारा domain है, this is our codomain. So 1 2 3 4, every entry is mapped with a b c d. Yes, e and f are left alone. So that means it's a 1 1. See, 1 के साथ a है, कोई भी repeat नहीं हो रही है, देखो आपकी सब अलग अलग में जाके मिला है. So it's a 1 1 mapping, but it is not onto mapping. सर्जेक्टिव onto है, जो onto नहीं होता उसे into map बोलते हैं. Okay, into क्यों? क्योंकि यहाँ कोडोमेन में सी दे हैव सम एक्स्ट्रा एंट्रीज. Okay, a b c d तो मैप हो गए, e और f छूट गए. So this is not onto, it is not surjective, it is into map. Okay, the next one, this is a many one. See, two entries, two pre-images have the same image. So this is a many one. From many we are getting the same image. One many one map हो गया है, तो ये 1 1 नहीं हुआ या ये इंजेक्टिव नहीं हुआ. ओके, एंड इनटू है अगेन बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज सी ए ई एफ, दीज आर नॉट मैप्ड विद एनी, तो एक्स्ट्रा एंट्रीज हैं. सो दिस इज, दैट मीन्स योर रेंज क्या आएगी? रेंज विल बी बी सी डी. सो range is smaller than the codomain. Codomain में extra elements हैं. So this is into mapping, not a surjective. Next one, this is many one again because two entries mapped with one. Many one है लेकिन ये into map नहीं है, ये onto map है. क्यों? क्योंकि codomain पूरा use हो गया आपका. Codomain is your range. Okay, range is ABC, उतने ही members थे codomain में. So this is an onto or surjective. Okay. This last one is the most important one, which is 1 1 as well as onto. See, every image has a pre-image and there is no extra entry in the codomain.
range is exactly equal to the codomain. So this is onto, this is 1 1. It is injective, surjective, and any map which is injective as well as surjective is called a bijective. Okay, that definition they've given you here. A function f from x to y is said to be 1 1 onto bijective. दोनों nature जो show कराता है उसे हम bijective बोलते हैं if it's both 1 1 as well as onto. Okay, so those are all your definitions that you need to keep in mind here, and then again there are many examples here which obviously you will read through children once on your own and see what you understand and ask me whatever you don't understand. Okay, I've done certain questions here, not completed the whole exercise. I've just taken few examples to make you understand what we were talking about just now. Okay, like let's see, the first question here is saying show that a function from r star to r star defined by fx is equal to 1 upon x is 1 1 and onto, where r star is set of all non-zero real numbers. Okay, first this much part, then we'll come to the second part. Okay, so for the first part, to check whether it is 1 1 and onto or not. So this was a mapping, this was the function as it was defined. अभी हमने 1 1 की definition में क्या बोला था, कैसे check होता है 1 1 nature? आप मान लेते हो कि let two images be the same. Let two images be the same, and when you assume these two images to be the same as I've done here, fx1 is equal to fx2 for some x1 x2 belonging to the domain. ये जो डोमेन है इसके टू मेंबर्स आप लोगे, आर्बिट्ररी मेंबर्स ले लिए. लेट x1 x2 बी टू एंट्रीज फ्रॉम द डोमेन सच दैट उनकी इमेजेस सेम है, कह रहे हैं हम यहाँ पर. ओके, ये इमेज होती है तो दोनों की इमेजेस सेम है, फिर आप उसका सोल्यूशन करोगे, जो डेफिनेशन है उसमें रख दो. Okay, if fx was this, fx1 will become 1 upon x1, this will become 1 upon x2. अब यहाँ से सॉल्व करके आप x1 and x2 के बीच में रिलेशन निकाल लो, क्या आ रहा है. तो ऑब्वियसली रेसिप्रोकल ऑफ टू रियल नंबर्स इज इक्वल ओनली इफ द रियल नंबर्स आर इक्वल themselves. Okay, so x1 is equal to x2. So that is why it is a 1 1 mapping. That is how we define 1 1 mapping. कि image same तभी हो सकती है जब एंट्रियाँ ही सेम है या प्री इमेज ही सेम है. ओके, अगर इसके बाद आपका कंक्लूजन आता है x1 हैज मोर, x1 इज इक्वल टू दिस एज वेल एज दिस, दो तीनों के इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट विल एक्चुअली बिकम मेनी वन मैपिंग. ओके, 2-3 एंट्रीज के लिए आपको सेम आंसर मिल गया, दैट इज मेनी वन मैपिंग. ओके, सो दैट इज द टेक्निक हाउ वी चेक 1 1 नेचर. ओके, द वे ऑफ राइटिंग यू हैव टू ऑब्जर्व चिल्ड्रन. डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे कुछ भी चीजें, इस पूरे चैप्टर में देयर इज थिंग्स आर नॉट रियली डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू, I don't know what I should say. If you read it, yes, क्योंकि वो theoretical है तो it becomes a bit problematic children, but once you do read the solutions twice, thrice and try to grasp, okay, हमें ऐसे लिखना है, and तो वो अपना फिर आते जाएगा. All right, so don't think कि ये कुछ अजीब सा है and leave it. That is my advice, because questions आने ही आने हैं उसमें से, अच्छे खासे मार्क्स के आते हैं, 10 मार्क्स का राउंड. ओके, सो यू हैव टू डू दैट एक्सरसाइज, बट कीप रीडिंग इट, तो धीरे धीरे आपको ईजी लगने लगेगा. ओके, दिस वॉज फॉर 1 1 नेचर. नाउ फॉर ऑन टू. अब ऑन टू के लिए आपको क्या करना है, आप ऑन टू के लिए कोडोमेन से एंट्री पिकअप करोगे. सो यू वुड से लेट वाई बिलोंग टू दैट कोडोमेन, एंड इफ दैट इज योर इमेज देन इट इज सपोज टू बी y will be fx, then it will be, फिर definition में रख दो, fx क्या था 1 upon x. अब यहाँ से x वर्कआउट करो, चेंज ऑफ सब्जेक्ट लास्ट ईयर भी किया था हमने. ऑल राइट, सो यहाँ से इफ y इज दिस, रिमेंबर डोमेन एंड रेंज लास्ट ईयर फाइंड करने के लिए रेंज के लिए उल्टा काम करते हैं, सेम थिंग. तो नाउ y इज इक्वल टू 1 by x, सो आप अपना x बनाओगे यहाँ से, तो x विल बी ऑटोमेटिकली 1 by y. ओके, सो नाउ व्हाट शुड हैपन, ये जो एक्सप्रेशन बन गया है यहाँ पे, यू जस्ट नीड टू चेक कि अगर x ऐसा है तो क्या ये x इस सेट को बिलोंग करता है. ऑल राइट, सो नाउ सिंस आई हैड सेड y इज अ रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर. ओके, इट वाज अ नॉन जीरो रियल नंबर. सो नॉन जीरो रियल नंबर का मैं रेसिप्रोकल कर रही हूँ. सो रेसिप्रोकल ऑफ अ नॉन जीरो रियल नंबर इज ऑल्सो अगेन अ रियल नंबर ओनली. राइट, सो एंड हमने क्या बोला था, हमारा डोमेन क्या है, डोमेन भी नॉन जीरो रियल नंबर था. तो वी हैव शोन कि जब वी स्टार्टेड ऑफ बाय पिकिंग वन इमेज, वन एंट्री फ्रॉम द कोर डोमेन, एनी एंट्री आर्बिट्री हो जाती है फिर. ओके, आर्बिट्री एंट्री फ्रॉम कोर डोमेन, तो उसका जो मुझे प्री इमेज मिला, एक्सेस प्री इमेज आउट हियर, वो डोमेन का मेंबर था. तो इसका मतलब हर कोर डोमेन के लिए, हर इमेज के लिए हमारे पास एक प्री इमेज है, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन.
ओके, सो इफ दिस x का जो भी एक्सप्रेशन है, दिस यू आर श्योर बिलोंग्स टू योर कोडोमेन, योर डोमेन, देन यू से इट इज एन ऑन टू मैपिंग. तो यस, हमें पता है कि रियल नंबर का रेसिप्रोकल भी रियल नंबर होगा, तो हमारी जो डोमेन थी वो रियल नंबर होनी थी, तो इसलिए ये ऑन टू मैप है. ऑलराइट, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप धीरे धीरे देखोगे समझ में आ जाएगा आपको, बस डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज 1 1 एंड व्हाट इज ऑन टू. Okay, now for the same children, it was they had changed the question as, is the result true if the domain is replaced by n and the codomain remaining the same. अब उन्होंने mapping change कर दी है. See, for the second part of the question they are saying now this function is being mapped from n to r, natural number to all non-zero real numbers. So this will still remain as 1 1. Now you tell me why will it remain as 1 1? ओके, बिकॉज 1 1 में हम क्या कह रहे थे कि हम रियल नंबर्स पिकअप करेंगे, एंड अगर रियल नंबर्स की इमेजेस सेम है तो ये नाउ दिस टाइम यू वुड से x1 x2 बी रियल नंबर्स एंड देन दिस देन x1 इज इक्वल टू x2. सो वही बात आ रही है कि हर रियल नंबर का रेसिप्रोकल, कभी भी ये नहीं होता है कि टू नंबर्स अगर अलग हैं तो उनके रेसिप्रोकल सेम होंगे. ओके, एवरी रियल नंबर हैज़ अ यूनिक रियल नंबर. ओके, सो इट विल स्टिल बी अ 1 1 मैपिंग. नाउ व्हेन वी चेक इट्स ऑन टू नेचर, तो हमने क्या बोला था कि ऑन टू नेचर में ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा डोमेन का मेंबर, नॉट कोडोमेन चिल्ड्रन, डोमेन का मेंबर होना चाहिए. ओके, सो आई स्टार्टेड ऑफ हियर, मैंने एक नेगेटिव एग्जांपल दिखा दिया यहाँ पे. ओके, जब वो नॉट होता है, व्हेन इट इज नॉट अ सर्जेक्टिव, नॉट एन इंजेक्टिव, तो अगर आप एग्जाम्पल से उसे क्लियर कर दो तो मच बेटर. ओके, लाइक आई हैव पिक्ड अप अ y was supposed to be a real number, right? So I've picked up 3. 3 is a real number. Okay, so then this 3 will be equal to 1 upon x. Okay, according to the definition. Then from here x will come as 1 upon 3. अब ये x की वैल्यू जो 1 upon 3 आई है, is 1 upon 3 a natural number? No. तो इसका मतलब ऐसे रियल नंबर्स हैं हमारे पास जिनका मुझको प्री इमेज नहीं मिल रहा है. Did you get that? This is what I've shown कि कोडोमेन में कोई ऐसी एंट्री थी जिसका प्री इमेज नहीं था, मीन्स कोडोमेन बड़ा था कंपेयर टू रेंज. या जैसे कि अभी आपने मैपिंग में देखा, कोडोमेन की कुछ एंट्रीज आर नॉट मैप्ड विद डोमेन, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट ऑन टू. इज इट क्लियर? तो बस आपको इतना दिखाना होता है कि ये जो एंट्री है रियल नंबर में, तो ठीक है, हर रियल नंबर का रेसिप्रोकल इज ऑल्सो अ रियल नंबर, बट हर नंबर का रेसिप्रोकल जरूरी नहीं है नेचुरल नंबर हो, हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे. ओके, तो एक नेगेटिव एग्जाम्पल कोट कर दो, एंड यू शोन दैट इफ वी चेंज द डोमेन फ्रॉम r to n, this will not be on to any more. Clear?